Hello, guys and girls. Jai Hind, all of you. I hope you all are well and good. Welcome to the YouTube channel of Vishwas Nishant. This is the first chapter of microeconomics, and it will be covered keeping in mind that you are preparing for UPSC civil services and other state civil services. The students of class 11th can also listen to it, as it will help them to understand the following chapter. So the first chapter, let's start with the chapter. The first chapter is economy, plus we will understand what is economics, plus we will understand what are the central problems of economy. Fine. So starting with the introduction, that is economics. We all know that our wants always remain unfulfilled. हमारे जो wants हैं वो कभी पूरे नहीं होते हैं. हमारी ग्रीड ही इतनी है. अगर हम कहीं बाहर खाने जाते हैं अपने फ्रेंड के साथ, तो हमेशा सोचते हैं कि नहीं यार, 100 रुपए नहीं, जेब पे से 500 रुपए निकलने चाहिए थे. अगर 500 निकलने लग जाएं तो नहीं, 1000 निकलने चाहिए थे. काश मेरे पास ये गाड़ी होती, काश मेरे पास ये बाइक होती. हम काश क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे जो वांट्स हैं वो कैसे हैं? दे आर अनलिमिटेड. और काश एक और कारण से करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं, पैसा, इज लिमिटेड. सो द फर्स्ट थिंग इज दैट वी हैव unlimited wants plus limited resources. We have unlimited wants and limited resources. So what can be concluded from this is that there is always scarcity of resources. There is always scarcity of resources. अगर इन दोनों को कंपेयर करें, there is always scarcity of resources. On the other hand, these resources, a resource can be a land, can be a money. लैंड पे आप राइस उगा सकते हो, आप वीट उगा सकते हो, आप पल्सेस उगा सकते हो. पैसे को आप खाने के लिए यूज कर सकते हो, पैसे को आप उड़ाने के लिए यूज कर सकते हो, उससे गाड़ी खरीद सकते हो, उससे रेंट भर सकते हो, उससे पानी खरीद सकते हो, जूस खरीद सकते हो, लिकर भी खरीद सकते हो. द कंक्लूजन इज दैट रिसोर्सेस हैव मल्टीपल यूजेस. These resources have multiple uses. पहला, रिसोर्सेस कम है. दूसरा, मल्टीपल यूजेस है. 50 रुपए हैं, रेंट भी भरना है, खाना भी खाना है, बाइक की EMI भी देनी है, सब कुछ करना है. क्या करोगे? 50 रुपए में से 10 रुपए रेंट वाले खाते में डालोगे, 20 रुपए में EMI भरोगे और 20 रुपए में खाना खाओगे. क्या किया? मैनेजमेंट. आपने क्या किया? बड़े ही रैशनल तरीके से आपने उसकी मैनेजमेंट की है. इस मैनेजमेंट को ही मैं क्या कह रहा हूं? इकोनॉमिक्स. इस मैनेजमेंट को ही क्या कह रहा हूं मैं? इकोनॉमिक्स. डायग्राम चलता जाएगा आगे.
ना इकोनॉमिक्स, ये जो मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट आप दो लेवल पर कर सकते हो। मैनेजमेंट दो लेवल पर हो सकता है, एक इंडिविजुअल लेवल पर, क्योंकि पैसा कमाना और पैसा लगाना कैन बी एट इंडिविजुअल लेवल, अर्निंग मनी, getting revenue and spending can be at a national level also. When you are practicing economics, when you are managing rationally, when you are taking decision keeping in mind that the resources have multiple uses, allocating resources to those multiple uses, and realizing the fact that there is scarcity of resources, you are actually doing economics, and you do it at the daily life, daily बेसिस पे करते हो। कहीं घूमने जाना है तो भी 10,000 रुपए है, होटल कितने का लेना है, खाना कितने का खाना है, क्लब कौन से वाले में, सस्ते वाले में जाना है, महंगे वाले में जाना है। So when an individual level you manage this, it is called microeconomics, छोटा। जब आप नेशनल लेवल पर करोगे तो दैट इज मैक्रोइकोनॉमिक्स। अब ये इंडिविजुअल कोई भी हो सकता है, एन इंडिविजुअल can be a consumer, an individual can be a producer। कंज्यूमर क्या सोचेगा, what would consumer think? Consumer would think of demand, consumer would think of कि मैं मैनेजमेंट ऐसे करूं कि सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए, मैनेजमेंट ऐसी होनी चाहिए कि सेटिस्फैक्शन हो, तृप्ति हो, बस खा रहा हूं तो भूख ना लगे 10 दिन। अरे खाना यहां से नहीं, यहां से होता है, सॉरी, खाना आपको पेट देखकर खाना होता है, जीभ देखकर नहीं खाना होता, इसका दिमाग साथ में लगाना होता है। खाते वक्त हम दिमाग कर लेते हैं बस आने दो आने दो आने दो, प्रॉब्लम ग्रीड, मैनेजमेंट नहीं है। हम खाना जीभ देखकर खाते हैं, खाना ये और ये देखकर खाना चाहिए। तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर, तो इसलिए इसके लिए क्या होगा हमारे पास इकोनॉमिक्स में, इसके लिए हमारे पास है थ्योरी ऑफ डिमांड, कि कंज्यूमर का तो काम क्या है, डिमांड करना। प्रोड्यूसर थिंक ऑफ सप्लाई, कि भैया बस बिक जाए सामान, फिर तो पैसा ही पैसा है। थ्योरी ऑफ सप्लाई, सप्लाई ज्यादा डिमांड कम, इफ सप्लाई इज मोर डिमांड इज लेस, प्राइस वुड फॉल। If supply is more, demand is less, price would fall. Market में market is full of potatoes, but all the families in the city are fed up of eating potatoes. Would you buy it? नहीं ना। The vendor would say, भाई सब नुकसान हो जाएगा, ले जाओ, 5 रुपए किलो ले जाओ यार, 2 रुपए किलो ले जाओ, प्राइस वुड फॉल। डिमांड इज हाई, सप्लाई इज लेस, उल्टा प्राइस वुड राइज। चिकन खाना है सबने, एवरीबडी वांट ईट चिकन, चिकन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, पोल्ट्री फार्म बंद है, द प्राइस वुड राइज। तो फ्रॉम दिस theory of demand and from this theory of supply, there would come
a theory of price also. There would be a theory of price. So we will read all these theories in microeconomics. Coming on to the next, macroeconomics. Now, when at the national level, who will manage this? Government. And what is the objective of government? Objective of government is welfare. Objective of government is welfare. So for welfare, what would government do? It will look at the aggregate supply and the aggregate demand. The government would look into कि किसकी supply total, the supply all the people are demanding for, the supply all the people want to do, all the producers want to do, the demand all the consumers are making, aggregate supply, सबकी supply, सबका demand, उसके बेसिस पर प्राइस डिटरमाइन होगा. प्राइस, इफ प्राइस इज इंक्रीजिंग, महंगाई बढ़ रही है. इफ प्राइस इज डिक्रीजिंग, महंगाई कम हो रही है. इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन. सो दिस aggregate supply and aggregate demand may lead to inflation or deflation. The difference, depending on the difference. If the supply is more, deflation. If the supply is less, inflation. This table would continue. I don't have the space, but you have the total space. Single page, 2 pages, and whole the chapter is completed. Whole chapter is full of the chapter is completed. 2 pages. You just need 2 pages. Understanding the concept. That is what we need. Chalo. Inflation, deflation. Now to control inflation, deflation, there are some policies: fiscal policy and monetary policy. So inflation, deflation, fiscal policy, monetary policy, national income, everything would be written macroeconomics. As simple as that. What is economics? What is microeconomics? What are macroeconomics? The first 3 points of your first chapter are completed at a single page. It won't take a single page also. 75% of the page. Single side, sir, single side. This is how we should study. This is how we should study. This is education. So, economics done. The concept of economics completed. Now, the other 2 points, that is economy and central problems. First of all, economy. There are 4 economic activities, majorly 4 economic activities. The one is production. The second is consumption. The third is investment. And the fourth is exchange. Usually, what is the definition of economic activity? Economic activity is an activity in lieu of which you are being compensated. ऐसा काम जिसके बदले में आपको कोई मुआवजा मिले. वो पैसे का भी हो सकता है, गिफ्ट का भी हो सकता है. टोटली डिपेंड्स अपॉन यू. यूजुअली इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपको पैसे के बदले ही काम करना होता है. अ फार्मर इन्वॉल्व्ड इन फार्मिंग but is only doing for its family. Satisfaction मिल रहा है, but it cannot be calculated. What is the value of satisfaction? ये measure कैसे करोगे? Can't measure. You can't measure.
And that is the reason we people are getting commercialized day by day. We are not running behind the peace. We are running behind the problems. Maximum of the people living in the urban city running behind money are leading a very peaceless life, very peaceless life. Economically, they would be strong, but peace is zero. Satisfaction, zero. Not at all. Because it does not have any scale, there is no measurement. People, society judges you with double digit package. It does not judge with you कि how much happy life you are leading. पैकेज कितना है? अच्छा, डायबिटिक हो? अच्छा, पैकेज कितना है? 15 लाख का है. लोगे? डायबिटीज ठीक कर दो मेरी, ले लो. ये बैक एक ठीक कर दो मेरी, ले लो, मेरे से ले लो. इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्रोडक्शन, प्रोड्यूस करोगे बदले में पैसा मिलेगा, कंज्यूम करोगे बदले में देना पड़ेगा, इन्वेस्ट करोगे बदले में रिटर्न मिलेगा, एक्सचेंज करोगे, फॉरेन एक्सचेंज, डॉलर के बदले रुपी, रुपी के बदले यूरो, बदले में कुछ ना कुछ मिलेगा. When all these economic activities take place in a region, it can be a nation or a country, it can be a city, it can be a state. इसको क्या बोलेंगे हम? इकोनॉमी. The economy of USA is very good in comparison to economy of India. What does it mean? You might have listened it many times. What does it mean? It means the production in rupees or in dollar is more. The consumption in rupees, you can call it anyway, or dollar is more. The investment in rupees or dollar is more. Exchange is more in comparison to India. That is what this means. Economy, GDP. However, I should not explain it over here, but I just want to introduce how we should understand the concepts. Gross domestic product. जितना ज्यादा प्रोड्यूस करोगे, प्रोड्यूस किसके हिसाब से करोगे? कंजम्पशन के हिसाब से. प्रोड्यूस ज्यादा करोगे, पैसा ज्यादा बचेगा, इन्वेस्ट ज्यादा करोगे. इन्वेस्ट ज्यादा करोगे, रिटर्न आएगा, उतना ही एक्सचेंज करोगे, उतना ही बाहर घूमने जाओगे, बाहर और इन्वेस्ट करोगे. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. प्रोडक्ट इज प्रोडक्शन, डोमेस्टिक विद इन द टेरिटरी. समझ नहीं आती है. क्या समझना इसमें? समझने वाली चीज ही नहीं है, सुनने वाली चीज है. एक बार सुन लिया, याद क्यों करना है इसको? एबीसीडी याद करते हो क्या अभी भी? समझ लो. इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द रीजन इज इकोनॉमी. Diagrams. Coming on to the central problems. Why are we discussing central problem? अरे किसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है भाई? किसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है? बताओ. तो इकोनॉमी में तो प्रॉब्लम हो सकती है. हाँ या ना? Here are the problems. First problem. What to produce? क्या प्रोड्यूस करे इकोनॉमी में? क्योंकि सब कुछ, एवरीथिंग वर्क्स ड्यू टू प्रोडक्शन.
what to produce. Now it has two aspects. Which type of good to produce, or which type of service to produce, and in what quantity. Here it means कि क्या you would be producing a consumer good or you would be producing a capital good. Would you be producing a consumer good or would you be producing a capital good? Consumer good जो ultimately directly that can be consumed, biscuit, milk, which can directly be consumed. Capital, a type of good which helps in further production. You have produced a good or a machine which helps in production of this marker. Capital good. So good can be a consumer good or a capital good. A consumer good, अब जो consumer good है, that would lead to good quality of life. A capital good will enhance production capacity. Yes or no? Capital good से क्या होगा? More production. Consumer good से good quality of life. What to produce? Second, how to produce. How to produce. Now there are two aspects in it. The technique and the raw material. टेक्निक, ज्यादा लेबर यूज करोगे तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक, ज्यादा कैपिटल यूज करोगे तो कैपिटल इंटेंसिव. व्हाट इज कैपिटल? द मनी विच यू इन्वेस्ट व्हेन यू स्टार्ट द बिजनेस. बोलते हैं ना बिजनेस करना आसान नहीं है, स्टार्टिंग में पैसा लगाना पड़ेगा, स्टार्टिंग में 10 लाख रुपए तो चाहिए. वो 10 लाख रुपए क्या है? कैपिटल. कैपिटल से क्या खरीदोगे? मशीन खरीदोगे. अगर आप मशीन खरीदोगे, अगर आप कैपिटल से मशीन खरीदोगे तो आपकी एफिशिएंसी क्या होगी? ज्यादा. लेकिन आपकी कॉस्ट क्या होगी? अगर देखा जाए पर प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. वैसे कॉस्ट बढ़ जाएगी, वैसे इन्वेस्टमेंट आप करो ज्यादा हो जाएगी, लेकिन लेबर में अगर आप कर रहे हो तो आपकी एफिशिएंसी क्या है? कम है. एफिशिएंसी इज इन एन आवर हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर यू प्रोड्यूसिंग. एक घंटे में कितने प्रोडक्ट्स निकाल रहे हो? एफिशिएंसी. एक घंटे में कितने पेज पढ़ रहे हो? एफिशिएंसी. उसी एक घंटे में 40 पेज पढ़ना, उसी घंटे 50 पेज पढ़ना. द वन हु इज रीडिंग 50 पेजेस, उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है. अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अ यूनिट ऑफ टाइम, एफिशिएंसी. लेकिन यहां पर कॉस्ट क्या बढ़ सकती है? ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि ये एक घंटे में ज्यादा प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे और ये एक घंटे में कम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे. हाउ टू प्रोड्यूस रॉ मटेरियल. यू नीड टू प्रोड्यूस, यू वांट टू प्रोड्यूस अ चेयर, प्लास्टिक चेयर, आयरन चेयर, वुड चेयर. कौन सा है ना प्रॉब्लम? प्रोडक्शन करने आए अगर आप इकोनॉमी में, तो पहले तो ये सोचोगे व्हाट टू प्रोड्यूस, फिर ये सोचोगे हाउ टू प्रोड्यूस, फिर ये सोचोगे फॉर हुम टू प्रोड्यूस. किसके लिए प्रोड्यूस करना है? रिच के लिए, पुअर के लिए. फॉर हुम टू प्रोड्यूस. देयर नीड टू बी टारगेट ऑडियंस ना. Maximum of the business fail because they do not target their audience at the initial stage. Don't compare it with Reliance. Reliance has reached the heights. इसलिए वो हर चीज में आ रहा है, इसलिए वो कॉन्ग्लोमरेट बनने की कोशिश कर रहा है. But at the starting, in the initial years, you should know what is your target, what is your target audience. Are they children? Are they adult? Or are they aged? Are they rich people? Are they poor people? Are they middle class? There should be a target audience. And the last problem is
The last problem is for whom to produce. I don't have a space, but I think you are attentive enough to listen to me. इसके नीचे क्या बन जाएगा? Rich or poor. और क्या बन सकता है इसके अंदर? Which is mentioned in your book. Factor income करनी है अगर factorial distribution करना. Factor distribution is there are 4 factors of a business. When you invest capital is a factor क्योंकि आपको बिजनेस चलाने के लिए 4 चीजें चाहिए. फैक्टर एक पहला चाहिए कैपिटल, पैसा. दूसरा चाहिए आइडिया, एंटरप्रेन्योर देगा. तीसरा चाहिए आपको लैंड, जहां पर आप जगह बनाओगे, प्रोड्यूस करोगे कुछ. चौथा चाहिए आपको लेबर. तो आपको कैपिटल के बदले इंटरेस्ट देना पड़ेगा, आपको एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देना पड़ेगा, आपको लैंड के बदले रेंट देना पड़ेगा, आपको लेबर के बदले वेजेस देने पड़ेंगे. दैट इज फैक्टर इनकम. ये जो 4 मैंने बाद में गिनाए फैक्टर इनकम है. फैक्टर को दी हुई इनकम, बांटी हुई इनकम इज अ फैक्टर इनकम. देन इज इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन. इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन यू हैव डन विद इन द एंटरप्रेन्योर्स और द शेयर होल्डर्स. You have given less wages, you have given less rent, you have given less interest and divided the whole of the profit within the stakeholders, within the shareholders. For whom to produce? मतलब the things which you would produce, उसका benefit किसको जाएगा? Sorted? Now if there is a problem, if there is a evil, there is a God also. So if there is a problem, there is a solution also. Now there is not one solution to them. So if there is not one solution, usually there are 3 types of solutions, and hence on the basis of this solution, if we are discussing problems of economy, so the solution would be 3 types of economies, no? अगर आप इसमें एक चीज चूज करोगे तो वो एक टाइप ऑफ इकोनॉमी होगी, दूसरी चीज चूज करोगे तो दूसरी टाइप ऑफ इकोनॉमी होगी, तीसरी चीज चूज करोगे तो तीसरी टाइप ऑफ इकोनॉमी होगी. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज. द फर्स्ट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सो कॉल्ड मार्केट इकोनॉमी. Second is socialist or centrally planned. Third is mixture of both, hybrid, mixed economy. So what would happen in capitalist economy? What to produce? Sir, I would produce जिसकी डिमांड ज्यादा है. Because capitalist economy, market economy, private entrepreneurs are in the market to earn profit. The thing which has a higher demand or the thing for which people are willing to pay more would be produced. It can be capital good, it can be consumer good. Quantity will be dependent on the demand. So we can also say market forces. Market forces are supply and demand. It would depend upon the market forces also. If the demand is more, that would be produced. Supply is less, that thing would be produced. It would depend upon the market forces. Socialist, it would depend upon the social welfare. That thing would be produced because it is centrally planned. The interference of government is more over here. The economic activities, production, mainly production, is being handled by Sarkar, government. And the motive, objective of the government is social welfare. So social welfare is the main, social welfare would be kept in mind when the government would be thinking what to produce. A thing that would lead to maximum social welfare.
अच्छा, last, mixed economy depends. It depends. Depends upon the sectors which are under the government. Mixed means both of them would be there. Depends upon the sectors which are under the government and the sectors which are under the private individuals or organization. तो जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन के अंडर हैं, दे वुड सी द मार्केट फोर्सेस. उसके अंदर जो गवर्नमेंट के अंडर सेक्टर्स, उसमें गवर्नमेंट वुड थिंक ऑफ सोशल वेलफेयर. सो देयर वुड बी बोथ. फाइन. हाउ टू प्रोड्यूस? नाउ capitalist market, their ultimate motive is to earn maximum profit. So they would emphasize on the things or on the production technique in which the cost is less. In which the cost is less, per production cost is less, and also as they belong to capitalist economy, they have very good amount of money, so they would go with capital intensive. You can write it capital intensive technique, or a technique where the cost is less. Socialist. Now, government needs to think of social welfare also. It also need to emphasize on unemployment. So it would usually go with labor intensive. भैया employment भी तो करनी है. यहां पर दोनों प्राइवेट में कैपिटल इंटेंसिव, so which the sectors which are under the government, labor intensive, both. Next, for whom to produce? Obviously the rich class, or the class which are willing to pay, which can pay. Socialist, usually poor class, because socialist would think to produce the products which are essential items, essential goods or services, wheat, rice, hospitals. वो यहां पर ध्यान देंगे, तो वो पुअर क्लास को भी देखेंगे, सोशल वेलफेयर देखना है. ये इसमें दोनों डिपेंडिंग अपॉन द सेक्टर टू सेक्टर. 2 pages. Chapter is complete. The topic is completed. Just 2 pages. Why to keep on reading the same book thrice, 4 times, 5 times, and not able to remember diagrams? Just 2 pages. If I have to rub it twice, तो आपके तो 2 pages भी नहीं लगेंगे, because I have a limited space. So my motive is to at least create your foundation, to at least create your base strong. Because being a civil servant, there are a lot of things to be remembered. But it's upon you how you settle them in your mind. Management, administration, that is your motive for your life, even for your service. मैनेजमेंट करना है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है. आप इतने सिलेबस का मैनेजमेंट कैसे करोगे? दैट इज व्हाट यूपीएससी वांट्स टू जज विद इन यू. फाइन. So that's all for this topic. See you in the next lecture. Bye then, take care.